Yes, hello friends. Arya, can we start our new point today? Amines. This is the primary amines. And primary amines are symbolized by RNH2. One alkyl group will be attached with primary amino group. There are two methods for the nomenclature of primary amine. First one common method, second one IUPAC method. Then what is the difference in both method? Yes, numbering. In common method, numbering is to be given as alpha, beta, gamma, and IUPAC method, numbering will be given as 1, 2, 3, 4. Yes, in case of suffix or prefix, in common method, amine is to be used as a suffix. In common method, yes, we will go from left hand side to right hand side. First of all, R is to be mentioned as alkyl. Sometimes, yes, primary, secondary and tertiary, this type of prefix are used during the nomenclature. And finally, NH2 is to be mentioned as amine. In IUPAC method, yes, reverse chalenge, Na2 is to be mentioned first of all as amino and R is to be mentioned as alkane. In second way, we will go from left hand side to right hand side. Here R is to be mentioned as alkane and then NH2 is to be mentioned as amine. So in IUPAC method, amino otherwise amine is to be used. Now you see, alkyl group having one carbon is methyl, two carbon is ethyl. Alkyl group having three carbon, there are two types of propyl, primary propyl and secondary propyl. And alkyl group having four carbon is known as a butyl. There are four possible structure of butyl group: primary butyl, secondary butyl, tertiary butyl and isobutyl. Yes, ये structure है. Suppose in case of common method, we will go left hand side to right hand side. Methyl amine. IUPAC method में aminomethen otherwise methane amine. इसके बारे में कॉमन मेथड में इथाइल एमाइन, IUPAC में रिवर्स चलेंगे एमिनो इथेन या इथेन एमाइन. In case of this compound, this is primary propyl group, primary propyl amine. लेफ्ट हैंड साइड टू राइट साइड जाएंगे. इन IUPAC मेथड वन एमिनो प्रोपेन अदरवाइज प्रोपेन वन एमाइन. दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल एमाइन या IUPAC में टू एमिनो प्रोपेन या प्रोपेन टू एमाइन. ये कंपाउंड देखो, अल्किल ग्रुप की श्रृंखला या चेन फोर कार्बन की है. Butyl, this is primary butyl amine. Yeah, one amino butane, because amino group is present on first carbon atom. Otherwise, butane one amine. This is secondary butyl amine. Yeah, two amino butane, otherwise you can say two butane two amine. In this case, this is tertiary butyl group, tertiary butyl amine. In IUPAC method, longest chain having three carbon, that's why propane. In propane में second carbon पे मिथाइल है और second पे amine है, amino group है. E for amino है, M for methyl है. In alphabetically order, Na2 is to be mentioned first of all. Then 2 amino, 2 methyl propane. Otherwise,
2-methyl prop 2-amine. This group is known as isobutyl group, isobutyl amine. In IUPAC method, 1-amino 2-methyl propane, otherwise 2-methyl propane 1-amine. This is phenylamine, you can say phenylamine, otherwise its commercial name is aniline. You can say aminobenzene, otherwise benzene amine BA, you can say. चलो स्ट्रक्चर पर से नाम बनाते हैं. सपोज प्रोपेन 2-amine प्रोपेन, अदरवाइज 2-amino प्रोपेन, प्रोपेन में से बना हुआ है. 1 2 3 कार्बन लिख दो और सेकंड कार्बन पे NH2 ग्रुप है. दैट्स व्हाई दिस इज 2-amino प्रोपेन, अदरवाइज 2 प्रोपेन 2-amine. Yes, 2-amino 2-methyl propane. Propane means carbon chain having 3 carbon atoms. Moreover, amino group is present on second carbon and methyl group is also present on second carbon. That's why this is second carbon NH2. This is CH3. बाकी हाइड्रोजन लगा दो. अच्छा, 2-amino butane means it is the derivative of 4 carbon atoms. Indicate 4 carbon, 1 2 3 and 4. Yes, 2-amino butane in which amino group is present on second carbon. This is second carbon. यहाँ NH2 लगा दो. CH3 CH CH2 CH3. Yes, 1-amino propane. Propane means 3 कार्बन एटम की चेन है. NH2 group is present on first carbon atom, that's why NH2. बाकी remaining valency is to be satisfied by hydrogen. देखो कॉमन नाम मिथाइलएमाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइल ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस वैलेंसी is to be satisfied. Yes, this is methyl group, open valency should be satisfied by NH2 group. In case of ethylamine, first of all you write down the ethyl group and यहाँ NH2 लगा दो. प्राइमरी प्रोपाइल एमाइन, तो दिस इज प्राइमरी प्रोपाइल ग्रुप, यहाँ NH2 लगा दो. सेकेंडरी प्रोपाइल एमाइन, तो सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप लिखो, यहाँ ओपन वैलेंसी है, वहां NH2 लगा दो. प्राइमरी ब्यूटाइल एमाइन, तो दिस इज प्राइमरी ब्यूटाइल, ओपन वैलेंसी इज टू बी सेटिस्फाइड बाय एमिनो ग्रुप. सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ NH2 एड कर दो, ये हो जाएगा. टॉर्सिब्यूटाइल एमाइन, तो दिस इज टॉर्सिब्यूटाइल एमाइन है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो टॉर्सिब्यूटाइल ग्रुप लिखो. देन ओपन वैलेंसी इज टू बी सेटिस्फाइड बाय NH2. आइसोब्यूटाइल एमाइन, दिस ग्रुप इज नोन एज आइसोब्यूटाइल ग्रुप. देन ओपन वैलेंसी इज टू बी सेटिस्फाइड बाय NH2 ग्रुप. ओके फ्रेंड्स, यस, थैंक यू स्वरा. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. इन केस ऑफ सेकेंडरी एमाइन की बात है, ये प्राइमरी एमाइन है, अब सेकेंडरी एमाइन चलेगा. ओके, थैंक यू.